हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज हम खेलने वाले हैं एलन वेक 2। तो ये एक हॉरर गेम है और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा गेम का तो आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए हाजिर है और मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए गेम प्ले में डुबकी लगाते हैं। और हाँ, डरपोक लोग जो है ना वो दूर रहे। क्या मतलब, मैं खुद एक डरपोक हूँ? ऐसा कौन बोल रहा है? Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. वापसी से शुरुआत। कभी कभार उम्मीदों में ही रहना बेहतर होता है, बिना कहानी जाने। In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. एक डरावनी कहानी जिसमें सिर्फ शिकार और शिकारी रहते हैं और इस ट्रैप में हम सभी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कहानी मैं नहीं चाहता था और ना ही इसकी एंडिंग। ये कहानी हमें जिंदा खा जाएगी। ये कहानी शैतानी है और शैतान के काफ़ी चेहरे होते हैं। अबे ये कौन है नंगा सा? क्या चाहिए भाई तुझे? ये ज़ॉम्बी तो नहीं है कहीं? ओह शिट, इसका गेम प्ले हमारे ही पास है। भाई ये हमें नंगा क्यों बनाया गया है इस गेम में? तो भाई किसी जंगल में हमें फेंक दिया गया है नंगा सा। और कुछ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, ना ही चेक पॉइंट वगैरह, बस सीधा चलना है हमने। सामने कोई है? भाई छुपना पड़ेगा। ऐसी हालत में अगर किसी ने देख लिया हमें तो सीधी गोली मारेगा। ये हैं कौन भाई? रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चलो जाओ यहाँ से। यहाँ से कोई आवाज़ें आई यार, ये उन्हीं बंदों की होंगी। पता नहीं यार, ये हॉरर गेम है तो कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें आ रही है और कोई रास्ता मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, बस मैं चले जा रहा हूँ। ओ तेरी भाई, ये क्या चीज़ है यार? व्हाट द हेल? एक हिरन ने हमें डरा दिया। ये भाई ये क्या चीज़ है यार? ये अभी से डरा रहे हैं हमें। ना करो यार गेम वालों, खुदा का वास्ता है। तो भाई इस गेम में भर भर के भूत आने वाले हैं और ये अजीब सी आवाज़ें आ रही है, पता नहीं किसकी है। भूत भाई, कुछ तो भूतियापंती दिखाओ। अच्छा, तो अब हम शिफ्ट से भाग भी सकते हैं। नाइस। लेकिन भाई इसका पिछवाड़ा देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बहरहाल ये भी स्टार्ट है, पता नहीं क्या सीन है। ओ सामने बंदे। ये क्या था यार? कोई शेडो था मेरे ख्याल से। हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई, हमारा वहम है। चलते हैं आगे, शायद कोई हमें मिल जाए। अरे भाई ये अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, ये अभी से पेशाब ना निकाल दे मेरा।
बारिश भी हो रही है भाई जंगल में। सामने कोई है भाई, सामने गाड़ी है। शिट, छुपना पड़ेगा। हैं भाई, बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पर तो। और नो, ये हमारी तरफ ही आ रहे हैं। शिट, गोली मार दी किसी ने, इसकी ऐसी की तैसी। गए भाई। भाई इसने तो टपका दिया। ये कल्ट है और कल्ट की दुनिया से है। भाई छोड़ दो प्लीज। ओह नो, भाई इसने तो घुसा दिया चक्कू। शिट, अरे भाई भाई इसने तो दिल निकाल दिया यार। किसी ने देख लिया इनको। शिट भाई, इतना बड़ा छेद कर दिया इसके अंदर। हाँ, तो ये जो बंदे थे ये भी कल्ट ऑफ ट्री से थे। अब ये पता नहीं क्या सीन है कल्ट और कल्ट ऑफ वर्ल्ड। फिलहाल तो अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। ऑफ कोर्स यार, स्टार्टिंग है, लेकिन आगे चलते जाएंगे तो समझते जाएंगे। मसला नहीं है, सब समझा दूंगा मैं। तो गाइस सीन ये है कि हम पहले जा चुके हैं। इट इज़ इट वाट इट इज़। अब हुआ है ना असली गेम शुरू। ये तो बस ट्रेलर था। Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. तो ये कुछ इतना खास नहीं था। अपनी बेटी से ही बात कर रही थी। Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. तो ये FBI वाले हैं। एक का नाम है एंडरसन और दूसरे का नाम है एले। तो अभी जो है हम कोल्डरल लेक में हैं और काम करने का टाइम आ चुका है। Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. तो यहाँ पर हमें एक डेप्यूटी से मिलना है I should take a look at that और map. सामने हमारे मैप। तो चलो उसको चेकआउट करते हैं। ओके,
तो ये कोल्डरन लेक का जो है मैप खुल चुका है और हमें यहाँ पर पार्किंग लॉट में, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। I think I hear someone. Could be our deputy. I can. आवाज़ आ रही है किसी की। Hey, over here. ये डेप्यूटी तो नहीं है। Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? अच्छा, तो हमारा नाम है सागा एंडरसन और हमारे साथी का नाम है एलेक्स केसी। और हाँ, यही है डेप्यूटी मोलिगन। तो इससे थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, inside. अबे सीधा सीधा बोलना भाई, दिल बाहर निकाल के फेंक दिया है और इतना बड़ा छेद कर दिया है। हमने तो पूरा देखा है, लेकिन ये घुमा फिरा के बता रहा है। Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. तो वो दो बंदे आपको याद ही हो गए जिन्होंने कत्ल होते हुए देखा था। तो वो बंदे जो है पकड़े जा चुके हैं और वो भी हैं एक टाउन में। उनको बाद में देखेंगे। I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. तो चलते हैं डेड बॉडी की तरफ, शायद वहाँ पे कोई हमें सुराग मिल जाए। तो हमने जो है नदी से होकर जाना है कि स्टोर पे, और वहाँ पर हमें मिलेगा थॉर्टन जो कि हमें डेड बॉडी Before दिखाएगा। we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. ये क्या चीज़ आ रही है? केस बोर्ड। The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. तो ये जो है हम एक माइंड प्लेस में आ चुके हैं और जो भी हमें क्लू मिलते जाएंगे हम जो है बोर्ड पे चिपकाते जाएंगे। नाइस। तो ये जो सामने बंदे हैं हमारे, इन्हों का भी मर्डर हो चुका है और सेम तरीके से ही हो चुका है। आप देख रहे हो सामने पिक्चर्स। तो ये 2010 में मिसिंग हुआ था, 2012 में मिला और ये 2018 में, और तीनों का जो मर्डर हुआ है ना सेम तरीके से ही हुआ है। ओके, तो बाकी तो इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पर। जैसे ही हमें क्लू मिलते जाएंगे हम उनको यहाँ पर बोर्ड पे चिपकाते जाएंगे और केस को जो है ना सॉल्व करते जाएंगे। तो चलते हैं वापसी। I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a... और ये है हमारा मैप और हमने जाना है जनरल स्टोर की साइड पे। तो चलते हैं वहाँ पर ही, नीचे जाना है हमने। Hey, Casey. You're a better
detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. अच्छा, तो ये हमारी तारीफ़ें कर रहा था कि मतलब तुम मेरे से बेहतर हो केस सोल्व करने में। तो साजा ने बोला कि क्या तुम रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, और तुम्हें ये भी पता है कि जो उनका आखिरी मिशन होता है उसमें क्या होता है एफबीआई वालों के साथ। पता नहीं क्या होता है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन कुछ खतरनाक तो होता होगा। ये क्या चीज़ है? मिरर पीक। कुछ इतना खास नहीं है, चलो भाई। Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. इनको बड़ी पसंद आ रही है ये जगह, लेकिन जब भूत आएंगे ना तो भाई फट के फ्लोवर हो जाएगी। Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. इनको मज़े आ रहे हैं भाई जंगल में। जंगल में कहीं मंगल ना हो जाए। Yeah, but there, can I make it more? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. अच्छा, तो यही है थॉर्टन, और डेड बॉडी जो है जनरल स्टोर के पीछे ही है। So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? अबे ये बंदा मुझे पीके लगता है, पता नहीं क्यों। ओके, तो हमारे सामने बॉडी है। Now this is the scene of the crime. और शिट, अबे ये क्या दिखा दिया यार? ये कवर्ड क्यों नहीं है साले? ऑप्शन में जाते हैं, शायद कोई ऑप्शन हो बंद करने का। यहाँ पर तो नहीं है। इंटरफेस में जाके देखते हैं। यार नीचे लिखा तो हुआ है न्यूडिटी सेंसर, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा। तो अब क्या कर सकते हैं? PD. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. तो हमें पहला किलो मिल चुका है। Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? तो मुझे लगता है यही लोग पनौती है, जैसे ही टाउन में आते हैं कोई ना कोई मर जाता है। और तो कुछ है नहीं यहाँ पर करने को, चलो वापसी चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्लू ढूंढने हैं। Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. तो 3 किलो हमें मिल चुके हैं, तो इसको बोर्ड पे चिपकाते हैं। लेकिन ये लगेगा कैसे है? अबे लग जा यार। ये क्या सीन है? That's not right. ओह अच्छा, तो ऐसे। Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about.
तो 3 क्लू हमें मिल चुके हैं। पहला ये कि छाती में जो है ना खंजर मार के दिल निकाला गया, दूसरा, और तीसरा ये कि बाजुओं और टांगों को जो है ना बांधा गया। लेकिन इस बार जो है ना दिल भी छोड़ गए। अब वो दिल क्यों छोड़ के गए? क्योंकि 2 बंदों ने उन्हें देख लिया तो उसी को पकड़ने के लिए छोड़ के चले गए। लेकिन खैर वो बात इसको नहीं पता क्योंकि अब नहीं देखी है वो स्टोरी ऑफ कोर्स। Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. अच्छा, तो अब ये पता लगाना है कि हमारा विक्टिम कौन है। Multiple people were here. Multiple killers? तो सामने और भी क्लू मिले। यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ना पाँव के निशान मिले। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बंदे थे। हाँ भाई, बहुत सारे तो बंदे थे, मैंने खुद देखे। तो इससे पूछते हैं कि विक्टिम कौन Any है। idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sister. तो इसका नाम जो है वो नाइटिंगेल है, और ये भी जो है ना FBI वाला ही है। और ये 13 साल पहले गायब हुआ था और अभी जो है ना नज़र आया है। और मज़े की बात ये है कि इसको कैसी भी जानता है नाइटिंगेल को। तो चलते हैं माइंड प्लेस में, और ये जो हमें क्लू मिलते हैं ये लगाते हैं बोर्ड पे। लग जा भाई। अबे यार, इसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब जिसके क्लू होंगे ना उसके सामने ही लगेगा। ठीक है भाई, समझ गया मैं। Oh. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? ओके, तो अब चलते केसी से बात करते हैं। So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. अच्छा, तो केसी इसको जानता है लेकिन इसके साथ कभी काम नहीं किया। Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. ओके, तो नाइटिंगेल जो है वो 13 साल पहले गायब हुआ था, और बाकी जो मर्डर हुए हैं ना इससे पहले, वो भी 13 साल पहले ही गायब हुए थे। तो FBI से फायर होने के बाद जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन पे चला गया और शराबी बन गया, और वो अजीब अजीब सी चीज़ें करने लगा, जैसे कि भूतों को पकड़ना, जब तक जो है ना वो गायब नहीं हो गया। Waiting. अच्छा, तो यहाँ पर कोई शराब पी रहा था। Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. और यहाँ पर कोई ट्राइपॉड भी छोड़ गया। मतलब क्या भाई, वीडियो बना रहे थे क्या, टिकटॉक बना रहे थे? तो चलते हैं माइंड प्लेस में और इसको सॉल्व करते हैं। Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. अबे भाई लग जा, कहाँ लगाना है? अबे यार, ये तो दूसरे पन्ने पे लगाना है। मैं भी यार पागल हूँ। They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale?
He's been missing for 13 years. अच्छा, तो किलर्स जो है उसी का ही इंतजार कर रहे थे, उनको पता था वो यहाँ पर आएगा। Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ओह, तो ये नई चीज़ आई है प्रोफाइलिंग। अब ये पता नहीं क्या है, देखते हैं इसको। मिसिंग पर्सन, राइटल मर्डर। Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ओह नाइस, तो इसके पास ये नई पावर है और ये बातें कर सकती है भाई सब्जेक्ट से, उसके दिमाग में झांक सकती है। Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. अच्छा, तो नाइटिंगेल जो है वो नदी की तरफ से आया है। The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. तो अभी हमें जो है ना नदी की तरफ जाना है और वहाँ पर हो सकता है कि और कोई भी क्लू मिल जाए और ज़्यादा क्लू मिल जाए, तो चलते हैं वहीं पर ही। Anderson, did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. कुछ नया नहीं, बस वही के नदी की तरफ से आया नंगा और किलर्स उसका वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर एक सामने जो है फुटप्रिंट मिला है, They come out from under the boulder. Makes no sense. लेकिन वो कोई सेंस नहीं बना रहा क्योंकि सामने जो है पेड़ है बहुत बड़ा और कोई रास्ता भी नहीं है आने जाने का। लेकिन हो सकता है कि रास्ता बंद हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। और यहाँ पर एक पेज भी है लेकिन वो उठा नहीं पा रहा हूँ मैं। अबे भाई उठ जा, कैसे उठेगा ये? तो जूम करके भी देख लिया, अब यहाँ से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओह अच्छा, तो एग्जाइट करना था। A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation.
How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. ओह भाई, तो यहाँ पर हमने भाई एलन वेक का रिफ्लेक्शन देखा और यहाँ पर पेपर पे कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना, अभी तक गेम प्ले में जो कुछ भी हुआ है ना, वो पहले से ही स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये एक मैसेज है इनके लिए। Or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. ओके, तो अब चलते हैं माइंड प्लेस में और यहाँ पर प्रोफाइलिंग करते हैं इस पेज के बारे में। We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि छाती में जो है ना सुराख करके कुछ डाला गया है। अब वो क्या डाला गया है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा स्टोरी के साथ। तो केस बोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम क्लू चिपका देते हैं जो भी हमें मिले हैं। ये फुटप्रिंट भी हमें मिला है। I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. ओके, तो उसकी बॉडी को जो है हमने पोस्टमार्टम लेके जाना है और पता करना है कि उसकी बॉडी के अंदर है क्या I think आखिर। something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. You made it back. Deciding what Good. happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ओके, तो ये लोग जो है ना बॉडी को पहुंचा देंगे हॉस्पिटल और शेरिफ ब्रेकर ने जो है ना विजिटर्स को पकड़ लिया है जिन्होंने देखा था खून होते हुए। तो वो है ओ डियर डिनर टाउन में और हमें यहाँ पर एक चाबी मिल गई है जो कि शॉर्टकट है ऊपर जाने के लिए। Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. ओके, तो गाइस हम ब्राइट फॉल जो है उन विजिटर्स के पास जो है अगली वीडियो में जाएंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना डोज काफ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।